Page number 295, HS equation. Calculate the optimum profit maximizing selling price for component for the period. HS equation. HS manufactures components for use in computers. The business operates in highly competitive market where there are large number of manufacturers of similar components. HS is considering its price strategy for the next 12 weeks of one of its components. The managing director seeks your advice to determine the selling price that will maximize the profit to be made during the period. You have been given the following data. The current selling price of the component is 1350, and at this price the average weekly demand for over the last 4 weeks has been 8,000 components. An analyst of the market shows that for every 50 increase in the selling price the demand reduces by 1000 components. चलो ठीक है. कॉस्ट तो दिया वो फिर कंपोनेंट्स इक्वली फिर वही दिया कि 5000 रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस डिमांड इंक्रीज बाय 1000. फिर अपन कॉस्ट पे जब मार सकते हैं कि द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इज 270. The price is part of the fixed price contract with the direct supply with the material suppliers, and the contract does not expire for another year. Production, labor and conversion costs together with other overhead costs and the corresponding output volumes दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये अपने को हाई लो मेथड से निकालना पड़ेगा शायद. हम्म फाइन. तो क्या करना है? ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालना है. ठीक है. आएगा मेथड से ना। नहीं, हाई लो मेथड से तो अपने को खाली उसका वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा हम्म या ओवरहेड कॉस्ट जो भी. 295 ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस. समरी. ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस इतना in order to find the optimum selling price, we need to use the formula P is equal to A plus BX. नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? A माइनस बी एक्स. हाँ, फिर A माइनस बी, इसको सिर्फ बी लिख देता हूँ, एंड देन एक्स को P मिल जाएगा विच इज A माइनस ब्रैकेट ओपन टू एक्स वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स. सबसे पहले बी ढूंढ लेते हैं जो सबसे इजी है. बी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, change in price upon change in quantity. So PQ मुझे मिल जाएगा मेरा B 50 divided by 1000. So 50 divided by 1000, ये आ गया A. In order to find our A, we need to use an equation
an equation and substitute the values of p and x. So p, so इक्वेशन जो बन सकता है यहाँ पे वो ऊपर में दिया गया है। कंपोनेंट सेलिंग प्राइस 1350 एंड 8000 कंपोनेंट्स बेच रहे हैं। सो 1350 इज इक्वल टू ए माइनस 0.05 इंटू क्यू जो मुझे दिया गया है 8000 यूनिट्स। सो सेम चीज में यहाँ पे ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मुझे नहीं दिया, पी दिया गया है और मुझे यहाँ पे ढूंढना है ए को। तो सबसे पहले तो बी और बी इंटू एक्स ढूंढ लेता हूँ मैं। बी इंटू एक्स, सो एक्स इज 8000 एंड पी 1350 मुझे दिया गया है। सो अब मैं क्या करूँगा, ये तो डी इंटू एक्स मुझे मिल गया 400 का। तो अभी पी यहाँ पे, तो वहां जाके बी एक्स हो जाएगा प्लस उस साइड जाके, तो मुझे ए मिल गया 1750 का। सो देखो मुझे ए मिल गया 1750, मुझे मेरा बी मिल गया था ये। अब मुझे खाली ढूंढना है मेरा एक्स। एक्स इन ऑर्डर टू फाइंड अवर एक्स, फाइंड we need to use the, जी इसको ना मैं कंट्रोल से यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा खराब दिख रहा है। See, we need to find x. In order to find x, we need to use the formula mr is equal to a minus 2bq। ठीक है, mr मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट एंड marginal cost is equal to variable cost. For this, we need our variable cost that can be found out using high low method. Third one, वेरिएबल कॉस्ट। अरे माँ कसम कितना वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू इज इक्वल टू कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल है ना। एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में दो चीजें आती है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, ये 270 है। 270 cost at high activity level minus cost at low activity level upon uh, high activity level minus low activity level
तो भी cost at high activity level. Next, cost at low activity level. Low activity level यहाँ पे हाई एक्टिविटी लेवल। चलो चलो भाई चलो, हो जाएगा ये खत्म जल्दी जल्दी। Cost at high activity level is 7,000। एक दो तीन। लो एक्टिविटी लेवल 5,446। एक दो तीन। हाई एक्टिविटी लेवल में मैंने 9,400, उसी के सामने का सात, हाँ उसी के सामने का 70 लाख लिया है। लो एक्टिविटी लेवल है 7,300, उसी के सामने का वो लिया हुआ है 740। अरे भाई बहुत ज्यादा आ रहा है तो मुझे लग रहा है। 740 कहते हैं मेरा ओवरहेड कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू 3, इधर वर्किंग नोट 2, इधर वर्किंग नोट 1। Okay, so now we can easily use this entire formula here. So अब मुझे मेरा MR पता है जो है इतना, A तो पता ही है, और मुझे चाहिए 2B। तो जो है दिस इंटू 2, मुझे Q मिल जाएगा। लेकिन Q मिलने से पहले जो MR, नहीं A माइनस एम आर करता हूँ। A माइनस एम आर विच इज दिस माइनस दिस, एंड देन 2B तो प्लस में रहेगा, क्योंकि उससे मेरे को डिवाइड करना है। सो माई Q इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 2B। बनता है 7,400। तो मेरा Q यहाँ X यहाँ पे मिल गया। X Q क्या बोलता हूँ उसको, X बोलता हूँ सॉरी। X X मुझे मिलेगा 7,400, तो मेरा P आ गया 1380। भाई साहब इतना मेहनत करके लाया, अब गलत नहीं जा सकता। Optimum price is 1380। Let's go, 1380 is the right answer। पता है राहुल, एक बार मैं आंसर कर रहा था चेक, तो मैंने गलती से हम्म। अम्मी को बोला चल अम्मी चेक करते कि अभी अपना आंसर कितने से गलत है। हम्म। तो ये है अभी, identify and explain 3 reasons why it may be appropriate for HS to use this theoretical pricing model in practice। There are a number of reasons why it may be inappropriate for HS to use this model in practice। अच्छा inappropriate, हाँ इन्होंने भी inappropriate ही पूछा था, मैंने गलती से कुछ और पढ़ रहेगा। The model depends हम्म। on market structure being one in which there is perfect competition, monopolistic competition, monopoly or oligopoly। Being one in which हम्म। there is perfect competition, monopolistic competition, monopoly or oligopoly. While the market is highly competitive, it is unlikely that there is perfect competition, in which the action of one company cannot affect the market price. The model assumes that costs and demand follow a linear relationship, and that there is no step changes in fixed costs. Again, this may hold over a small range of volumes, but is unlikely to be true for all possible volumes. This model can only be used if the company has detailed knowledge of the demand and cost curves.
This model can only be used if the company has detailed knowledge of demand and cost curves. It is unlikely that in practice HS would be able to derive accurate cost and demand curves. ठीक है.